तो मैं ठीक जगह हूँ ये मत करो सर। हम अच्छे से बैठे भाई। अब ऐसा करेंगे तो अच्छी बात नहीं सर शुक्र काल सर मंजूरी ये है वो पढ़ के आपको सुनाऊं और इनकी हार्ड कॉपी जो है अभी तैयार की जा रही है। By the recent mortality attack in Pahalgam on 22nd April 2025 on innocent civilians, we hereby adopt this resolution in a spirit of collective solidarity and resolve. We unequivocally condemn in the strongest possible terms the heinous, inhumane attack in Pahalgam that targeted and killed innocent civilians. Such cowardly acts of brutality against peaceful citizens have no place in society and are a direct assault on the values of Kashmir and the ideal of India, which have long been a symbol of unity, peace and harmony in the region. We stand unwavering in our commitment to support all efforts to bring these perpetrators to justice. In doing so, we affirm that no act of terror can ever weaken our resolve or extinguish our indomitable spirit. We also support the steps taken by the Union government announced yesterday. We extend our deepest condolences to the families who have suffered loss. We share in your sorrow and stand united with you in this time of profound grief. We salute the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who ferried tourists on his horse in Pahalgam and was martyred during his attempt to fight one of the terrorists to save the tourists. His valor and selflessness shall remain forever an inspiration to all. He is a true face of Kashmiriyat and Kashmiri hospitality. We hereby commend our people for the extraordinary display of their moral and material support to all the tourists across the Kashmir Valley and for their resolute unity in condemning the recent attack. We appreciate the spontaneous, peaceful demonstration across towns and villages across the length and the breadth of Jammu and Kashmir, which exemplify our unwavering commitment to peace, communal harmony and the rule of law, and reaffirm our collective resolve to foster mutual respect, uphold constitutional values and work collaboratively for the prosperity and stability of Jammu and Kashmir. We humbly and earnestly appeal to the governments of all states and union territories in these trying times to come forward with unwavering commitment to protect the Kashmiri students and citizens who find themselves far from home. These individuals, whether travelling or residing outside Jammu and Kashmir, must be safeguarded against any form of harassment, discrimination or intimidation. We call upon all political parties, community leaders, religious institutions, youth groups, civil society organizations and media organizations in J&K and the nation to maintain calm, resist provocations of those who seek to disrupt harmony and continue working together for peace and development of the region. Unanimously adopted on 24th April 2025 in Srinagar by the consent of all members present at the all-party meeting. Yeah, you can distribute these copies. Mike, yes, sir. Yes, sir, Mike, yes, sir. Yes, sir, Mike, yes, sir. Mike, yes, sir. Mike. Okay, early time. Mike. Early time. उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे दी। जलाई
तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को देख सकते हैं उमर साहब यहाँ पे। सिम साहब नहीं होना चाहिए, बदकिस्मती यही है कि वो जो फोर्सेस है जो कोई भी बहाना नहीं कश्मीरी स्टूडेंट्स को टारगेट था और वही आज भी इसी इंसिडेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो स्टूडेंट जो अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जिनका इस इंसिडेंट के साथ कोई लेना देना नहीं, उन्हीं को टारगेट किया जाता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि किस एजेंडा के तहत चलता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। आगा साहब तारिक साहब, आजाद साहब, आजाद साहब, आजाद साहब, आजाद साहब, आजाद साहब 2 मिनट, आजाद साहब 2 मिनट, 2 मिनट, आजाद साहब 2 मिनट। जो कहना था हम लोगों ने यूनानिमसली रेजोल्यूशन है क्योंकि इस दुख की घड़ी में बार बार आयो हम उन 27 कार खाली उतार है, उनके परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपने बोल पाए वाला सर बच्चे नौजवान खो दिए पहलगाम में। इस वक्त पूरा मुल्क और जम्मू कश्मीर की पूरी अवाम इस दुख और दर्द में के साथ है और उसके साथ कश्मीरी या में जम्मू कश्मीर के जितने हिंदू या मुसलमान हैं सब यूनाइटेड हैं दहशत गर्दों के खिलाफ और दहशत गर्दी के खिलाफ। सर व्हाट अबाउट जो चलाया जा रहा है स्टूडेंट्स को धक्का मत मार।